you to do the same so that together we can learn. Yeah. So that is the first expectations. And like be here. You cannot be here physically, but mentally be here and be on time. Yes, good that like you will join on time and be enthusiastic. When you're enthusiastic, you can learn quickly and give response. I'll be asking so many questions. Try to answer it, and at the same time, you can also ask questions. So when I ask questions, like if you're aware, let us know. If you're not aware, also just inform that yeah, I'm not aware. Just give the response so that I will also feel like I'm not teaching to all. So cool. So what we are going to discuss is so many things in this session, like Excel versions, types of Excel extensions, about Excel data types, formulas, pivot tables, macros, many things. So as it is very limited time, I am trying to cover as much as possible. So let's start our session with this question. Which application is mostly used throughout the world? What do you think? कौन सा application like ज़्यादा use होता है? MS Office. MS Office. Okay. Any other people? Any other answers, guys? एक ही जन आंसर दे रहे हैं. Can I expect answer from other people also? आप chat भी बोल सकते हैं, chat में भी. Okay. Okay. Gmail, no idea. Okay, cool. That's fine. Like I expect like if you अगर आपको पता नहीं है तो बोल सकते हैं, no problem. And one more thing, like if I speak English plus Hindi, is that works? कोई भी ऐसा है क्या like हिंदी नहीं जानते वाले? Sir, I'm from South. I don't understand Hindi. Okay, fine, Rahul, no problem. Yeah, even I am from South, but I'm from Hyderabad, so I speak Hyderabadi Hindi. No problem. Like mostly I'll speak in English only. If anytime if I speak in Hindi also, I'll repeat the same sentence in English as well, so that you don't miss anything. Okay, Rahul? Sure, sir. Yeah. Okay, cool. So which application is mostly used throughout the world is MS Office. Someone said yes, it is MS Office. 140 different countries, 102 billion people were using asset because like I took this particular slide when I used to work with the Microsoft. Yes, I used to work with the Microsoft like till 2017. So from 2018 onwards, I'm completely into trainings. I train more than 35,000 working professionals. So majorly like working professionals, few college students, 5 to 10% only college students. Precious. So fine. So this number not accurate now because day by day number of users for the Excel, is that increasing or decreasing? It is increasing. Obviously it is increasing. So cool. So Microsoft Excel is one of the greatest, most powerful and most important software application of all time. And if you see here, what are the key features of Excel? What do you think? Why we use this Excel? For what purpose we use Excel? Simplify the maths. Okay, Satish Singh. Okay, how about others? While you're answering, guys, like you can Creating graphs. Okay, creating graphs. Yes, correct. Sir, to store data in easier way. Absolutely. Yes, for storing data also correct. Yes. What are the answers? You said all the answers are right. Yes. So someone said storing data, right? You see here. Yes, we store the data. See, Excel is not a perfect database, even though people tend to store their data in Excel. Whether it is a text, numbers, alphanumeric, macros, shapes, images, it could be anything. You can store the data in Excel. Not only storing, you can do different calculation as well. Mathematical trigonometry, like what do you call lookup formulas. Mathematical functions are there, like statistical functions, financial formulas. There are different categories of formulas are available in Excel. So using that, you can do lot many calculation by using Excel. So, and also we analyze data. So we can analyze data as well. So here is the analyze data. Analyzing data can be done. Analyzing data can be done. Whether it's conditional formatting, pivot tables, R filters, dashboards, all these are the part of like the key features are like basically these three: storing, calculation, and analyzing. What are the answers you said? Sir, excuse me. Yes. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can you repeat in Hindi? So मैं बोल रहा था कि like why we use Excel? I was asking. So people given some answers, right? मैं बोल रहा हूँ like why we use Excel for the storing the data और calculation के लिए और also analyzing the data. So these are the three major categories है. So अब जो भी answers बोले थे ना वो सब yeah, organizing data, data management, simplifying the formulas, calculations, all this comes under ये तीन categories में ही आता है. Okay, Pratik? Okay, done, sir. Yeah. So what is the latest version of Excel? आपके पास कौन सा version है latest version? Which is the latest version? People who did not understand this version means I'll ask this way. क्या बोलते हैं? Which is the latest iPhone model? कौन सा है?
आईफोन वर्जन लेटेस्ट वाला कौन सा मॉडल? 16. iPhone 16 अपने पास है तो भी नहीं है तो भी we know that iPhone 16 is the latest, right? So similar to that iPhone or Samsung, it could be anything. So like in MS Office also we have the different versions. So 2007, 2010, 2013, 16, 19, 2021, 9 Microsoft 365, there are different versions. So you can see here Microsoft 365 is always latest version. And 2021, 2019, 2016, 2013, and these are the standalone versions. We call them as a standalone versions. But these Microsoft 365 is always latest version. There is a slight difference between, not slight, there is huge difference between Microsoft 365 and these versions. So what it means is Microsoft 365 is a subscription product. It is a subscription. Like whereas 2021, 2019, 2016, these all are the standalone versions. So इसका मतलब समझाऊंगा. So first of all, we'll see which version you're using. Okay. Let me click on escape. ओपन कौन सा तो एक्सेल ओपन करिए. ओपन एनी एक्सेल फाइल. Once you open any Excel file, you will see like this, correct? Home ribbon, insert ribbon, draw ribbon, like this. These are the ribbons, correct? So if you want to know which version you're using, आप कौन सा version use कर रहे हैं आपको पता होना है तो so click on this file and click on the account. Once you click on the account, you can see mine is a Microsoft 365. Microsoft 365 subscription product for this ID. Is this clear? Yes, sir. Okay. Now you guys tell me which version you're using. Type it in the chat box. I would like to know which version you people are using. Sir, can you please show it again, please? Sorry, sir. Sure, no problem, Bhaja. So here, open any Excel file. Once you open it, click on the file and click on the account. You can see that mine is a Microsoft 365. This is the account and this is a subscription product. अगर नॉर्मली लाइक अगर मैं बोला हूँ लाइक आपके पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है बोल के पूछे तो आप लोग बोलते हैं ना मेरे पास नेटफ्लिक्स का है, मेरे पास अमेजन का है, हाँ ZEE5. दीज आर द सब्सक्रिप्शन, राइट? सो व्हाट यू मीन बाय वो जनरल सब्सक्रिप्शन OTT का मीनिंग क्या है? सो यू परचेज दिस, for example, Netflix subscription today. Next 1 year, you can use the Netflix subscription for free. I mean, not free, of course, we paid today, and next 1 year I can use it. So, what are the movies, web series, everything will be there in it. Any new movies releasing also tomorrow, that is also included in the subscription plan. Correct? So, similar to that, Microsoft 365 also same. Today, if you take in the subscription for next 1 year, you can use not just Excel. You can use Word, Excel, PPT, Outlook, OneNote, and Publisher and MS Access. Along with that, like OneDrive, like security, so much data security will be given, and you can use offline and also online. What do you mean by offline and online? See, this file is currently like if I go back, this file if I save it in my desktop, it is offline. But like if I save it in the cloud, from there you can send it to anyone. Whomever you share it. So there is online version also, you can use it, like web में भी use कर सकते हैं. So once you have the Microsoft 365, you do have the many features in Excel. So let me see your answers. Who is using which version? So Satish, as Prashant has said, like 2019, Satish 2021, and Gajanan saying 2021. How about other remaining people? Guys, I would like to know which version you're using. You can type it in the chat box. Pooja, how about you? Which version you're using? Sir, I am not Okay. finding it actually. Oh, is it? Okay. Let me stop my I'm screen sharing. not even finding it. Stop my screen sharing. You share your screen. Let me give that option. Yeah, I given that option. There is Rutuja, there is nothing called Excel 365. Instead, you should call Microsoft 365 or Office 365. Sir, Mac में भी same type, same ही process है check करने का. Yeah, Mac में थोड़ा different रहेगा, इतना latest नहीं रहेगा, मगर like almost will be the same. I mean to say like थोड़ा options different रहेगा. Are you using the Mac? Yeah. Okay. So Mac में एक बार chat GPT में एक बार search करो how to know which version I'm using, then it will tell you. Okay, sure, sir. Yeah. So I suggest at least for this Excel session, if you use the Windows with the Microsoft 365, you'll get the most out of my training. And Sure, yeah, someone said 2022. There is no version called 2022. Jai, 2022 version बोल के है ही नहीं. That's wrong. And Rutuja, it is not Excel 365. It is Microsoft 365. Yeah, Jai saying 2020. Yeah. 19 में 2020 भी नहीं है. There is Jai again. There is no 2020 version. हेलो सर. Yes, Prajwal, बोलो. तिथे मतलब वहाँ 2021 दिखा रहा है. मुझे लग रहा है वहाँ पे बाय नहीं किया होगा. कैसा चेक करना है फिर से बता रहा हूँ, देखिए. मैं गया अकाउंट पे, वहाँ पे सिर्फ ऑफिस दिखा रहा है. ओके. ओ यहाँ दिखा रहा है क्या ऊपर? ऐसा फाइल नहीं दिखा रहा है ना? हाँ. Nothing but you're using the 2007 version. ये ऐसे लोगो रहता है. ओ that is the 2007 version. So बहुत पुराना यूज कर रहे हैं, काम नहीं करता. I mean करता है मगर नया फीचर्स नहीं है. ऐसा सोचो कि लाइक आपके पास फोन है, कॉलिंग करने के लिए, मैसेज करने के लिए है, मगर नॉट ए स्मार्टफोन. सो यू कैन व्हाट्सएप, टेलीग्राम कुछ भी नहीं रहता है. फोन में क्या बोलते हैं लाइक इफ यू वांट टू टेक द पिक्चर्स, यू कैन नॉट टेक द पिक्चर्स. वैसा है वो मॉडल 2007 का आपका.
ओके, मुझे 2013 का लेना पड़ेगा क्या? नहीं 13 का नहीं. So let me share it here again. See आपका 2007 का है. Like 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 ये सब different वर्जन्स है. मैं क्या बोल रहा हूँ, सबके सबके ऊपर जो भी है, I mean the latest version is always is the Microsoft 365. You go with the Microsoft 365. ओके, So वहाँ पे नीचे माइक्रोसॉफ्ट 365 ने ऑफिस अपडेट दिखा रहा है, और मेरे पास ऑलरेडी हो गया क्या? see this Microsoft 365 is upgrade बोले तो nothing but you need to pay. So upgrade ओके, करने के लिए वो पे करना है. तो आपको अभी बता दूंगा. Like हाँ, Microsoft 365 प्राइस इन इंडिया ऐसा टाइप कर लो, आपको पता चल जाएगा. लाइक it will cost you around 6,300. ओके, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ये है? पर मंथ का है ये हाँ, हाँ, 145 पर मंथ ऐसा है ना. तो ये हाँ, सब नहीं, मैं एक बंदे का नंबर देता हूँ. दैट पर्सन गिव यू एट 1800. आपको ईयर का हो जाएगा. वन ईयर का नहीं, लाइक क्या बोलते हैं, नॉर्मली इट इज 6,300. सो दे विल गिव इट द हाँ, 1800 फॉर 2 years. ओके, ठीक है, ठीक, ओके. ओके, So people who are not having the latest version, you can contact them, because like the one which I'm going to show, formulas and all, advanced formulas and all, those things require the Microsoft 365 for sure. Even you're using a 2021, there also many new features are missing in it. Formulas are missing in it. So एक वर्जन का और एक दूसरा वर्जन का डिफरेंस क्या है बोले तो, लाइक फीचर्स. अगर 2007 में जो भी है ना, 2010 में जो भी है ना, वो 2007 में जो भी है वो पूरा 10 में रहता. मगर 2013 में जो नया है वो इसमें नहीं रहता है. Just like your latest phone. In the latest phone, you have all the features of previous one and also new one, right? Like whereas if you're using the older version, then you'll miss a few new features, right? Same like this. So, okay. So I hope now you got a little idea about the Excel versions. I'll be sharing the slide with you. You can go through this. In each version, what is new things in it, mentioned in it, you can have a look into it. So, can you tell me how many number of rows we have in Excel? Number of rows in Excel, any guess? Unlimited. It is not unlimited, Satish. It is a limit. It has a limit. Okay. Maybe around 1,000 or 2,000. Okay, fine. Any other answers? 10,048, I think so. राहुल, आप देखें मगर करेक्ट आंसर नहीं देखे. इट इज नॉट 10,000. इट इज 10,48,576. Correct, sir. आप एक्सेल में जाके देख लिए, मगर जल्दी में बोलने के लिए आप 1048 देख के 10,048 सोचे कुछ, No, राइट? sir, 10 lakh, 10 lakh, I think the 4,85,076. You can see here. From 2007 onwards, number of rows got increased. From up to 2007, it was a 65,536 only. From 2007 onwards, the number got increased 10,48,576. Columns are 16,384. So there's at least 1 million बोल के याद रख लो. Otherwise 2 to the power of 20. So 16,384 are columns. Column means what? Column मालूम है ना? Column A, column B, column C, column D, and so on. If you consider A as a 1, B as a 2, C as a 3, and so on, the last column is a XFD. That XFD number is 16,384. Is that clear? Yes. Yeah. So cool. Now, whether you're using 7, 10, 13, 16 or Microsoft 365, number of rows, number of columns are same. Okay. Whereas like a version, like a 97,233, that old version, number of rows were only 65,536. Number of columns were 256. Yeah. So cool. Let me go here next. Let's see. Close this. I'm going to share one file. Give me a minute. I'll be sharing my screen. Give me a minute.
हेलो सर, योर वॉइस इज ब्रेक सर. No, I'm on mute. क्या बोलते हैं, like बात नहीं कर रहा था मैं. Don't worry. Yeah, I'm about to share my screen now. Sir, Yes, please. version 16.89.1. तो ये कौन सा version है? Like 2021 I think. Yeah. So Microsoft is Mac के लिए different versions रहेगा. So mostly it will be like while you are opening, like it might show you the name of it, but it is not a Microsoft हाँ. 365, correct? हाँ, license office LTSC standard for Mac 2021. Correct. Yeah. So So वो this works, right? see, few things definitely it will be missing. अगर आपके पास Windows लैपटॉप है तो उसमें यूज करें तो अच्छा रहेगा. Okay, Windows तो नहीं है अभी Yeah. से. Yeah. Which Microsoft version we need? I have Microsoft version 365. 365 is only required. Yes, Zubair. So if you're using the Microsoft 365, well and good. Okay. Hello, sir. Yes, please, Gauri. So after clicking on file, there is no option for account. Can you share your screen? I'll stop my screen share. Yes. You can share your screen. Oh, first thing, guys, you see here in a laptop, it is showing that book 1 Microsoft Excel product activation fail. Red color में ऊपर clearly दिख रहा है ना header में. So what it means, it is not a genuine version. It is a pirated version. So we Indians, like normally what happens is like when we are purchasing laptop, we think that Microsoft 365 भी, Excel भी आ जाएगा. मगर like most of the times people will give the not genuine version. So nowadays in the new laptop, they are giving the for 1 year they are giving the subscription. After that we need to renew it. So in simple words, to make it simple, like Gauri, what you are using is the pirated version. It requires the either product ID, otherwise you need to purchase the one of the version. So Okay, sir. at the end of the session, I'll be providing the one number. They will only install in your system. They'll install a Microsoft 365 latest version. जो मैं बोलने वाला हूँ पूरा उसमें आ जाएंगे. और like the good part here is like you can use the latest version for the 2 years. Okay. Okay, yeah. Hi sir. Yeah. Hi Kamlesh. अगर Excel 2019 है तो चलेगा. 2019 भी रहने दो, 2021 भी रहने दो, बहुत कुछ चलता है, मगर there are few advanced things that won't be available. For example, आप try करो, अभी मैं बताऊंगा, like there is a formula called filter. Let me show you. I'll open the new workbook, Excel workbook. Control N. देखो ये Excel file है ना. If I'm typing that filter formula, filter, can you see this filter is there? This filter is a very awesome formula, which is not available in the 2019 version. Is that clear? आप एक बार try करो. Normally some formula लिखो, आपके पास भी है, मेरे पास भी है. Some लिखो, आपके पास भी है, मेरे पास भी है. Correct. So whereas if I type the X lookup, V lookup आपके पास है, मेरे पास X lookup भी है, मेरे पास in the sense latest version में है. Is that clear? Yes. Yeah. So बहुत कुछ ऐसा मिस होता है older version यूज करे तो. Okay. Yeah. So fine. I close this workbook. I'll open this workbook. हेलो सर. हेलो Yes. सर. Yes, Pratik. बोलो. हाँ सर. हाँ. मेरे पास सर प्रोडक्ट की है तो उससे कर सकते क्या सर 365 इंस्टॉल? Microsoft 365 को प्रोडक्ट की नहीं रहेगा. Remember, Microsoft 365 won't have any product key. अच्छा. ओके सर, मेरे इसमें 19 ही बता रहे सर. हाँ, 19 19 19 ही है, होगा. So 19 है तो काम चलेगा, मगर थोड़े मिस होंगे, ऐसा है. ओके. या आपको पता चल जाएगा, आप एंड ऑफ द सेशन तक आपको पता चल जाएगा क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है बोल के. So yeah, let me open this file. Once you open this file, this is our file name, advanced Excel file 1.0 something. Start page है यहाँ, about Excel, flash fill, and so on. Multiple things are here written. So if you see here, like this is the start page. In the start page, we have the topic names. If I click on this topic name about Excel, it is taking you to the introduction to Excel. So about Excel, आप interview purpose आप पूरा पढ़ लीजिए. I don't want to spend time on it because it is a theoretical part. You can go through this. ये course content में भी नहीं है. मैं आपकी use होता है बोल के मैं add कर रहा हूँ इसमें. So you can go through this. If you click on this home button, again it will take back to the start page. You can go to like this also.
But instead, I prefer like a, hey, I want to go to Flashfill topic. You click on it, it will navigate to Flashfill sheet, and you have the different example, example 1, example 2, and on click of it, it will directly navigate to that example 3 and so on. Now I want to go back to example 1. Yes, you can go to example 1. Now I'm going to discuss about Flashfill. Let Excel do the typing for you, what it means. So see here. सर ये फाइल शेयर किया है क्या आपने? नहीं करने वाला हूँ, पहले शेयर करे तो आप लोग नहीं सुनते मेरे बात, सो पूरा मेरे कंट्रोल में रहना है, इसीलिए मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ. Okay, okay. सर यस यस पूजा. फ्लैश फिल मोस्टली डेटा क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं क्या? मैं किसके लिए बोलने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टेल दैट व्हाई वी यूज द फ्लैश फिल. Okay. Okay, So let's assume that we do have some names. So all these names we do have. From these names, we want to get only the first name. We want to just get the first name. Yeah. So I'm teaching this flash fill now. I have some names. From these names, I want to just get the first name. So if you want to get the first name, if you see here, what is the first name from this name? What is the first name? राजेश. Rajesh. Rajesh is the first name. Rajesh Nair. So we want to get the only Rajesh, and that too यहाँ तो lower case में है, मुझे proper case में लिखना है. Proper case में बोलते क्या है? First letter upper case, remaining all lower case called as a proper case. I write the Rajesh, enter. Once I enter, I don't want to enter Swati, Girish, Prakash, and so on. I don't want to type it one by one. Instead, if you don't have time, if you want to do that smart work, then use a shortcut key called Control E. Once you use the Control E is the shortcut key for the flash fill. So remaining all it is filled. It is a smart work. Like it understood the pattern, what you given earlier, and it is followed, and it is given remaining all for you. So is this clear? समझ में आया? Yes, sir. सर फिर से एक बार बताइए. जरूर शीतल. Yeah. So these all are the first names, like we got it, that's okay. Now someone might be thinking that, hey, why you got the only first name? I want to get the last name. So if you really want to get the last name, you write the one example. So what is the last name of this, from this Rajesh Nair? What is the last name? Nair. You type that Nair. one. So you know it, right? You just keep it in the Excel, enter. After that, you use the same shortcut key. What is the shortcut key? Control E. Control E. Once I use this Control E, you see this remaining all it is filled. Is this clear? Yes. So no. सर पहले हमें एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट करके रखना है क्या? फिर नहीं उसके बाद कंट्रोल ही करना है? सेलेक्ट करा क्या? नहीं तो कुछ ये भी सिलेक्टेड है ना? नहीं है. अच्छा ओके ओके ठीक है. मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही थी. लाइक यहाँ नेम है, उसके बाजू करना है, जो भी करना है ना, बाजू बोले तो क्या है, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है. ओके, मैं तो यहाँ राइट साइड कर रहा हूँ. करेक्ट. सो अभी देखो और एक एग्जांपल बोलने वाला हूँ. हेलो सर. यस प्रतीक बोलो. हाँ सर, विच शॉर्टकट की यूज की? आई सेड कंट्रोल ई. कंट्रोल प्लस ई. ई फॉर एलिफेंट. सो फाइन. मुझे अब क्या चाहिए बोले तो अभी तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ना, मुझे रिवर्स चाहिए. लास्ट नेम फर्स्ट नेम होना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना. So I want last name to be first name should be last name, and in between them there should be comma. Then you can do it. Why always Rajesh? Like let's go with the other example. Here we have Riya Mehta. Riya Mehta का reverse करें तो क्या होता है? Mehta comma Riya. I enter this. Enter. After that use the same shortcut key. Can you tell me that shortcut key? Control E. Control E. Absolutely. I'm just using the Control E. Remaining all it is filled automatically. Got it? Sir, if someone's name start name First is name, middle name, and similar. last name, then it won't हाँ. work. अगर महेंद्र सिंह धोनी है सोचो, ये काम नहीं करेगा. Oh. PVS लक्ष्मण है Okay. देखो, हैदराबाद के, so उनका भी काम नहीं करेगा. So what we need to understand is this name need not to be a name. It could be any value. It should follow some pattern. So in this case, the pattern is first name and last name. All of them are first name and last name only. There is no first name, middle name, and last name. Is that clear, Zubair? Yes. Let me give another example now. Yeah, surname comma first name. You write surname. एक first letter चाहिए surname में. So what is the surname? Here is a N, right? I'll write this N comma Rajesh. Enter. Control E. Remaining all it is filled the same manner. So N बोले तो राजेश नायर से A N लिया हूँ मैं. First letter. हेलो सर. हेलो. Yes please. Yes I'm listening. हाँ सर फर्स्ट रो में लिखना कंपलसरी है क्या सर? मैं क्या बोला? उसीलिए मेहता के पास लेके गया था ना. मेहता रिया. ये बीच में कर रहा था ना मैं. It need not to be do it in the first one. You can do it in middle also. Still it works. प्रतीक मैं इससे पहले एक एग्जांपल बोल रहा था यहाँ. Like I did not do here at top. I did it here. Still it was working above and bottom also. So for your coming to your question, it need not to be always top. Okay? Yeah. Okay नहीं है? डन सर. So now let's see the another example. I have the person names, richest people socho, and their companies, which company they are from.
And what is the net worth? Some information I got it from the ChatGPT. I kept it here. Now I want to make some sentence. What sentence you want to make it is up to you. For example, I want to write something like this. Mukesh Ambani is from Reliance Industries and his net worth is 92 billion. ऐसा कुछ लिखूंगा मैं. You see this? Mukesh Ambani is from, कहाँ से लिख रहा हूँ? Is from Reliance Industries and his net worth is like $92 billion, right? $92 billion. ऐसा कुछ लिख रहा हूँ. Some sentence writer. Agree? But in this, few things I added. Mukesh Ambani is from. There is nowhere it is written is from. This is just something helping words. But this Mukesh Ambani is coming from here. This Reliance Industries is coming from here, and 92 billion is coming from here. So other than that, some other extra words also I added. Correct. Once I enter, now you use the same shortcut key Control E. Remaining all it is filled in the same manner. Here you see this. Gautam Adani is from Adani Group, and his net worth is $68 billion. Is this clear? Yes. Yes, sir. और एक एग्जांपल देने के बाद मैं आपको फाइल भेजूंगा. आप लोग अब जल्दी sir. प्रैक्टिस करना है. So see here, like I have some mobile numbers. एक दो numbers नहीं है मेरे पास. 1 लाख numbers है और 10,000 है. You see this, some 10,000 mobile numbers I have. So the way I want these numbers is, यहाँ देखो, like these are the Indian mobile numbers. These are Indian mobile numbers. But if I see this mobile number, it is a little confusing. ये 3 7 है, 3 4 से कितना है मुझे, I mean readability wise it is not that great. But instead I want to write it this way: 8297-444-777. अगर मैं ऐसे ही फॉर्मेट में एक एक लिखना चाहिए तो 10,000 मोबाइल नंबर्स है. एक मोबाइल नंबर लिखने के लिए 13 की स्ट्रोक चाहिए. 13 क्यों 13 है? 4 numbers, 4 3s and 3 total 10 digit number है. इनके बीच में, like in between that, 2 hyphens, 1 enter. To enter one mobile number, you require the 13 keystrokes, right? And 10,000 into 13, 1,30,000 keystrokes you require. One day full इसके ऊपर ही चले जाएगा. आपका संडे पूरा ये numbers enter करने में चले जाएगा. So we don't have that much time. We want to do it really quick. So in that case, instead of seeing here and typing, you use a flash fill. Use a Control E and it is filled very quickly. You see this? Till you go down, yes, it is filled all of them correctly. Understood, guys? Zubair, Pratik, Pooja. Yes, sir. Hello, sir. Hello, sir. Yes, Pratik, बोलो. Hello, sir. Why we used anytime Control plus V shortcut key? क्यों यूज करते हैं? नहीं, नको यूज करो, आप टाइप करते जाओ. Sir, is it formula? Sir, it is inbuilt formula. So yeah, it is not a formula, it is a feature. क्यों यूज करते हैं बोले तो उसके लिए एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं. से क्यों यूज करना? अब मेरे पास 10,000 का नंबर है, ये फॉर्मेट में चाहिए मुझे. एक लिखते गए तो संडे पूरा इसमें ही जाता है. नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करके और दूसरा काम करना है, मुझे फ्रेंड्स के पास टाइम स्पेंड करना है. देन व्हाट यू डू इट ओनली वन एग्जांपल, यू गिव इट टू एक्सेल, देन यूज अ फ्लैश फिल. कंट्रोल ई बोलो, नहीं तो होम रिबन में जाके यहाँ एडिटिंग में डाउन एरो क्लिक करके फ्लैश फिल क्लिक करो. बोथ आर सेम. वंस क्लिक ऑन फ्लैश फिल, यस इट इज फिलिंग ऑल ऑफ देम. अब बोलो, लाइक ऐसा मैनुअली एक करते हुए करते क्या, नहीं तो फ्लैश फिल यूज करते. Flash fill. समझ में आया? हम्म. इससे पहले वाला भी वैसे ही था. मेरे पास नाम है, डेटा ऐसा है, मगर मुझे मैनेजर पूछ रहा है कि पूरा फर्स्ट नेम सेपरेट करो, लास्ट नेम सेपरेट करो. फर्स्ट मेथड एक मेथड है कि पूरा यहाँ से देखिए एक टाइप करते जाओ, वो पूरा दिन चले जाएगा. नहीं, लाइक आई वांट टू डू इट रियली क्विक, देन यूज अ फ्लैश फिल. इज इट क्लियर? Clear. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Guys, do you get the recording of my session as well? Do you get this recording? Yes. Sir. Yes or no? I have asked regarding the video recording. So that mentor told me from today's session we will get the recording, like we on the dashboard, and yesterday's session we will get on email. Fine. So you'll get the recording usually. So listen the recording as well. आप लोगों को like कुछ भी डाउट आया तो फिर से और एक बार सुन लिया तो सेकंड टाइम सुन लिया तो आपका डाउट्स पूरा क्लियर हो जाएगा. So I'm sharing this file now. What you do is like from here onwards use a separator and country code. कंट्री कोड बोलते क्या? 91 +91 पूरा इंडिया का नंबर है ना, ब्रैकेट में +91 बोल के लिखो, ब्रैकेट क्लोज करो और उसके बाद जो भी नंबर है ना, आपकी मर्जी कौन सा फॉर्मेट में लिखना है, आपकी मर्जी से लिखो. एंड यूज द कंट्रोल रिमेनिंग ऑल, इट विल फिल इट इन द सेम मैनर. इज इट क्लियर? यस सर. आई एम शेयरिंग Clear. दिस राइट नाउ. सर ये फर्स्ट सेशन है क्या अभी? या आज का फर्स्ट सेशन है. यस यस. सर कल कुछ हुआ था क्या सेशन में? मतलब I'm just asking. Excel wise today is the first class. So yesterday Okay. what was the topic? I am not really aware, but Excel classes today it is started. Okay, sir. Okay, yeah. I shared the file in the chat box. You can download it and take 2 minutes time and quickly finish it. आप कितना जल्दी करें तो मैं उतना ज़्यादा बोल सकता हूँ.
डन सर। Done, sir. Okay, Prashant, done. Very good. Like, how about others? I'm waiting for other participants to respond. It's downloading. Pooja Singh is downloading. Download it. हेलो सर। हेलो सर। Yes, Prashant. Yes, Pratik. सर हाँ यस सर, इधर टाइप क्यों नहीं हो रहा सर? इधर प्लस का ही साइन आ रहा है। I stop the screen sharing. Can You you share your explain sir what screen. is going on? You share your screen. Hello, sir. मैं प्रतीक का आंसर दे रहा था और कोई की Hello, बात. sir. Yes, Satish, बोलो. Meanwhile, Pratik, you can share your screen. I'll look into it. Yes, Satish, tell me. सर मेरा कुछ नहीं, कोई तो और बोल रहा था। किनका भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनका Hello, sir. स्क्रीन शेयर करो. So I'll fix that problem. आपका जो भी प्रॉब्लम है, स्क्रीन. Hello, sir. Hello, sir. Hello. सर Can't you hear me, guys? Due to poor network, I exit from the meeting. So please, can you Guys, can explain you hear me? something what is going on? Guys, can you hear me? Hello. Yeah, this guy is. Yes, we can hear you. Yes, sir, we can hear you. So I was speaking for a long time. Like, I mean to say, like, yeah, Pratik, बोलो. मेरा वॉइस बीच में रुक गया था क्या? नहीं ना? Hello, sir. Yeah, then please share your अभी screen. आ रहा है सर। सर शेयर कर दूं क्या सर स्क्रीन? Hello, sir. एक के बाद एक चीज लेंगे क्वेश्चन. Hello, sir. प्रशांत, मैं आपका ही बात कर रहा हूँ. Sir, प्रशांत, don't just say sir. You continue your question. प्रतीक, थोड़ी देर रुको ना. Yeah. Sir, due to my poor network, I exit from the meeting. Sir, please can you explain what is going on? See, we are discussing about the flash bulb. So what I suggest is, instead of repeating the same thing again, so I request you to go through the recording so that it won't be waste time for the other people. Because of your internet problem, I cannot repeat for everyone. If all of you are unable Sir, to, Sir, I just back 5 minutes. okay, then I no, just back then it share the for file. 5 One more time, minutes, I'll sir. share the file. मैं ऐसा करूंगा और एक बार फाइल शेयर करूंगा Sir, where is the file? इन द चैट बॉक्स में. फिर से शेयर कर रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं. चैट बॉक्स में है, फिर से आ रहा है. आप फिर से रीलॉगिन हुए ना, उसलिए. सो यू कैन डाउनलोड इट नाउ. आप चैट बॉक्स में एक बार देखो. आया नहीं आया? आया sir, आया हाँ, है। डाउनलोड करो. आपका वॉइस अभी भी ब्रेक हो रहा है. आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है, थोड़ा इंटरनेट ठीक कर लीजिए. सो नेक्स्ट प्रतीक. हाँ सर, मैं उधर टाइप भी नहीं हो रहा सर, उधर शेयर प्लस करें का ही तो मैं साइन आ बता रहा है। सकता हूँ. कहाँ टाइप करें मुझे पता नहीं चलेगा ना. सो आप. हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं क्या? या स्क्रीन प्लीज शेयर करूं सर? प्लीज. ओके सर। या सो एनेबल एडिटिंग ऊपर जो दिख रहा है ना, ऊपर टॉप मोस्ट एनेबल एडिटिंग क्लिक करना है. सो दैट एनेबल एडिटिंग बोले तो एडिट कर सकते हैं, तो खाली देख सकते हैं आप. सर एनेबल एडिटिंग तो नहीं है। अरे क्लिक में दिख रहा है येलो कलर में. फर्स्ट में येलो कलर में. दैट इज कॉल्ड नोटिफिकेशन बार. प्राइमरी अपन कभी भी पढ़ते नहीं ना. लाइक जो मैसेजेस फ्रेंड्स के पास आते हैं वही मैसेजेस पढ़ते हैं. ये सब नहीं पढ़ते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है ये सब. एनेबल एडिटिंग क्लिक करो. अभी तक क्लिक नहीं कर रहे प्रतीक, जल्दी करो. हाँ सर, इधर नहीं दिख रहा सर, कहाँ पे तो ढूंढ रहा हूँ। आपको येलो कलर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है एक्सेल में? हाँ, येलो कलर हाँ दिख रहा है। हाँ, वहाँ क्या लिखा है? बी केयरफुल. हाँ, इनेबल एडिटिंग दिखा सर। इतने देर के बाद दिखा आपको. ओके, क्लिक करो, उसको क्लिक करो. हाँ सर, हो गया। हाँ, उसका नेक्स्ट येलो कलर वाला है ना, उसका जरूरत नहीं है, उसको क्लोज कर लो, प्रॉब्लम नहीं है. सेकंड येलो कलर वाले को क्लोज कर लो. नाउ अब जो करना है आप यहाँ फ्लैश में यूज कर सकते हैं. आप कुछ भी टाइप करो, टाइप होता है. देखो एक बार हाई बोल के टाइप करो. सर नहीं हो रहा Sir, can I get a meeting का passcode? मीटिंग पासकोड, डू यू वांट मी टू टेल? 1 सेकंड. हाँ सर, हो रहा है, अभी हो रहा है सर। Because phone में it will not open. या Sir, I type N and then I press Control E, but it's showing the other result. First name, sorry. आप तो ऑलरेडी जॉइन है ना, लाइक पूजा, लाइक व्हाई आर यू आस्किंग फॉर मीटिंग डिटेल्स? हाउएवर आई Sir, शेयर. because मैंने phone से join किया था, because No laptop से problem. I join shared नहीं it in the chat box. You can join it. Yeah. Sure. Next one, please. हाँ, हेलो सर, अभी हो रहा है सर टाइप। अभी होता है. सो होते कि खत्म करना. मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ. तो बोले तो अपन यहीं पास करे तो विल वेस्ट. पूजा, once you speak, like please be on mute. Where you to be on mute. प्रतीक, आपका हो गया ना? स्क्रीन शेयर बंद करो. हाँ सर, मैं स्टॉप कर दूं? Yeah. हो गया। Hello, sir. Yes.
Yes, go. सर प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल है तो नहीं होगा क्या? नहीं होगा, उसके लिए मैं एंडिंग में एक नंबर दूंगा, उनसे हाँ, कांटेक्ट करो, वो लोग आपके सिस्टम में लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे। आपके पास टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर रहना है, आपके लाइक क्या बोलते हैं वो फ्री है, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर फ्री है, उसके हिसाब से आपको लाइक दे विल इंस्टॉल द लेटेस्ट Microsoft 365, so you can get the latest Microsoft 365, they'll charge you some 1800, okay? ओके So सर, for yeah, they'll give it for 1 year or 2 years, normally it will cost you 6300 ऑनलाइन में, okay? So सब लोग लाइक लेटेस्ट वर्जन Microsoft 365 है तो आपको कुछ भी करने का नहीं है, अगर नहीं है तो प्लीज ले लीजिए। ओके सर। Okay, shall we move on to the next topic? प्रतीक, आप म्यूट में नहीं रह रहे। Once you speak, have a habit of making that mute. ओके सर, अभी Yeah, sure. So I'm sharing my screen again. So I'll go to the live side. So one more example I'll give you. I have the vehicle numbers here. Vehicle numbers like I want to get the state code, Telangana, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu, and so on. So just give one example. Whether you give the first record or second record is up to you. I'll give the GJ, Gujarat, enter, control E, remaining all it is filled. Similarly, I'll give here 2901, enter, control E, remaining all it is filled. ऐसा है. So बाजू भी राइट साइड भी बहुत एग्जांपल्स है. So यहाँ नाम है, यहाँ SSN नंबर है. SSN नंबर बोलते हो सोशल सिक्योरिटी नंबर. So we have the names here and SSN number. इंडिया में आधार नंबर बोलते हैं, यूएस में SSN नंबर बोलते हैं. We call it as SSN, social security number. So it is a 9-digit number. Aadhaar number is a 12-digit, 4 numbers, space, 4 numbers, 4 numbers, next 4 numbers, total 12. But SSN number is 1, 2, 3, I mean 3 numbers, -2 numbers, -4 numbers. Like this format it is. So what we want is ये दोनों को मिला के कुछ सेंटेंस फॉर्म करो. आपकी मर्जी क्या सेंटेंस फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल एलिसन जॉकब्स SSN नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल के लिखो. यहाँ लिखता हूँ. नहीं तो सेकंड वाला दिखना. Enter, control E, remaining all it is filled in the same manner. Got it? सर Yes, Zubair. हेलो। Yes, Zubair. बोलो. हाँ, जैसा कि आपने नेम लिखा है, SSN नंबर लिखा है, आउटपुट लिखा है, तो ये डेटा ऐसा है कि मतलब ये ऑटोमेटिकली रन हो रहा है। मतलब वो जो ऊपर के पॉइंट है, जो बार आपने बनाने वाली है, वो पहले बनाना पड़ता, मतलब उसको डायरेक्शन देने के लिए, या फिर ये ऑलरेडी कौन सा ये बोल रहे हैं? ये जो जैसा नेम है, SSN फाइल है, ये खाली हेडर है, कुछ भी बनाने का कुछ भी नहीं. आप ये भी ले लो, आपको समझ में आने के लिए. सी फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई मैं दूसरी example फाइल नहीं दे बनाना है ऐसे टाइप की, तो उसको रन करने के लिए जो बार में जो नेमिंग की वाली, उसके हिसाब से ही वो ले रहा है, या फिर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. यहाँ देखो. सो यहाँ कुछ भी हेडर नहीं है, फिर भी काम करता है. नहीं तो पूरा नया वर्कबुक में लेता हूँ मैं. ओके, यहाँ कहाँ की ले रहा हूँ, काम करता है. लाइक वो हेडर से कुछ भी काम नहीं है. लाइक जुबैर, लाइक यू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये खाली ये 1 2 3 4 बोलते हो, ये क्या है बोल के पूछते हैं ना आप मुझे, तो इसीलिए मैं इसका नंबर SSN बोल के यहाँ नाम बोल के लिखा हूँ मैं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Whether you write the header or not doesn't matter. Is that clear? Got it. Yeah. Okay, cool. Yeah. Now I have the date. One last example. I have the dates here. From these dates, I want to get the month number, date and year. यहाँ देखो, like month number भी 12 है, date भी 12 है. So fine. So instead of giving this kind of example, I'll give the next example. I'll give the 11 here. Oh, month number 11 नहीं है. Month number is 10. So I'll give the month number as 10 and enter. Control E. Remaining all it is filled. Similarly, you can also enter the date as well. Date is let's say 17 here. Control E. Remaining all it is filled. So year also same 2024 बोल के लिखूंगा. Enter, control E, remaining all it is filled. Got it? Yeah, देखो like 2023 है ना, so it is going 2023. 2022, yes 2022, right? Now remaining all whatever I required, I mentioned here clearly. यहाँ मुझे like date है, order time, delivery time जो भी है, इसमें से मुझे खाली hour चाहिए, minute चाहिए, second चाहिए. मैं ऐसा जैसा करा ना वैसे ही आप भी ट्राई करो. So थोड़े जनों को like older version यूज करें तो ये एक एग्जांपल के लिए प्रॉब्लम होगा. So then you can leave it, but other example you can try. यहाँ देखो रैंकिंग है, like मूवी का नाम है, कितना कलेक्शन करा, कब रिलीज हुआ, this all the information is given here. You just need to write some output, some sentence लिखो. Dangal movie released on this date and box office collections are 2024 crores. So if I use a control E, remaining all it should fill in the same manner. What it should say, Bajrangi Bhaijaan released on 17/7 like 2015 and collected 969 crores and so on it should say. So like this, go through. And also I've given the notes as well. What is the Flashwell, when it is started? Flashwell is new from the 2013 version of Excel. So ये उसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल E. आपको पढ़ने का शौक है तो ये अच्छा पढ़ लो, आपको बहुत कुछ नॉलेज आ जाएगा. पढ़ो बिकॉज ओनली फॉर द बात कर रहा हूँ ना, होने के बाद बोल सकते हैं ना, पूछ सकते हैं ना, यू डोंट माइंड. ठीक है सर. Yeah, fine. So here is a Flashwell, that notes you can go through, and also some bonus tips also given. You can go through this. Yes, Pratik, now go ahead with your query.
हेलो सर। Yes, hello. हाँ सर, कंट्रोल प्लस की यूज करने से पहले सर एंटर करना पड़ता है क्या सर? एक एग्जांपल लिख के उसके बाद एंटर, नॉर्मली जो भी कुछ भी टेक्स्ट लिखे तो ऐसा लिखने के बाद एंटर बोलते हैं ना, बोलने के बाद नेक्स्ट सेल में जाने के बाद कंट्रोल ही बोलना है. ओके, ओके ठीक है, या राइट. सही क्वेश्चन। So I hope we are good with good to start with Hello, the sir. topic. Hello, sir. Yes, Nilanjan, बोलो. सर नोट्स वाला कहाँ पे मिलेगा? हाँ, नोट्स वाला कहाँ है? यहाँ देखे तो आपको फाइल में, यही फाइल में, ये शीट में, ये पूरा एग्जांपल्स है ना, यहाँ बटन दिख रहा है. अब नॉर्मली आप बुक और पेन लेके लिख लेते हैं ना. हाँ I am a go green guy. I don't want to waste. Sometime it's showing error. So Hello? yes, yes, Zubair, let me finish it. So Okay. once I click on this button, it is navigating to that particular notes, nothing but right side में है. Okay. Now Zubair, आप बोलो क्या है? What happened? I'll show my screen. Mm-hmm. Stop my screen. Okay. Yeah. Share it quickly. Yes. Share. Okay. Is it visible? Hello? Yes, it is. Yes, sorry, I was on mute. Yeah. Tell me. बोलो. जुबेर बोलो. हाँ, मेरा वॉइस आ रहा है ना. मैं आपको ये बताना चला ये फ्लैश जुबेर, no, we are unable to hear you at all. Sorry. Ending में पूछो आप, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. No voice. Sir, can you hear me? Yes, Am I- Pooja, I can hear you. I just wanted to ask, can you send that file again? I joined in from my laptop. Okay, sure. I shared the file once again. So In a chat box. yeah, in the chat box आ रहा है, like आ गया. Yeah, sir, got it. Okay, fine, Pooja. So Zubair, your voice is not audible. Like आप type कर लो, like type करो. I'll check that query and I'll try to answer it. Now I'm getting into another topic called fill series. Fill series. So what is this fill series? I'm going to explain. So I'll make it very simple case. मुझे क्या चाहिए बोले तो 10 to 10,000 चाहिए. I need 10 to 10,000. How do you enter? If you're not aware about the formula or feature, normal people regularly like they'll enter 10, 11, 12 and so on. If you know little about the Excel, some people say that क्या बोलते हैं आप, मेरा requirement ये है. What is your answer, guys? Tell me quickly. क्वेश्चन 17. सर पहले कैन यू सीरीज से जाना 10, 11, 12, 13. That means 10, 11, 12 जुबेर. and 13, 11, 12, 13, 14, 15 like the series. हाँ, कहाँ तक एंटर करेंगे? 10,000 चाहिए, अपन एंटर करते बैठेंगे क्या? नहीं. So we can just control What you need to understand is time is very important, crucial. उतना टाइम आजकल किसको भी नहीं है, तो Yes, yes. एंटर करने का, राइट? So अपना जनरेशन है इंस्टाग्राम जनरेशन, एवरीथिंग वी वांट वेरी क्विक. Yes. वीडियो भी लेंथी है तो नहीं देखते अपन, स्किप करो, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाओ. So same way here also. So we want really quick. So normally what people do is they'll enter the 10 and 11 and then after that they'll scroll down and so on. If you see that carefully, like you can see that number is showing some what number it is populating and all. I did not even complete 1,000 also. I require the 10,000. So if I stop it here, it is given up to 1117. ये fancy number मुझे नहीं चलेगा. I require the 10,000 and it is given only 1117. Oh, nothing but I need to select it and drag it down more. So we don't want to do this method. So you will end up by dragging more cells than what you required or less cells than what you required. Agree? So instead, how this needs to be done, I'll show you properly. You listen very carefully, focusly. अगर आप अच्छा सुन लिए तो ना, आप first example में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. So how to enter the 10 to 10,000 I'm showing. First I selected this cell, one cell, top cell. You enter the 10. Once I enter the 10, it is going to next cell. Obviously, anything you enter, it will obviously go to next cell. But without fail, don't forget, go back to the previous cell. Previous cell को चले जाओ, वहां रहो. इसको edit mode में भी ऐसा नहीं रहना है, ऐसा blink नहीं होना है कर्सर. पहले enter करते कि नीचे आता ना, उसके बाद go back to previous cell. Is that clear? Yeah. Yes. Then after that, Yes. ribbon. Cool, very good. So in the home ribbon, editing group, click on the down arrow. Once I click on the down arrow, click on the series. Once I click on the series, you can see here, like series dialog box is coming. This, let me zoom it for you. This series, it's saying that, hey, I fill the series of numbers by row wise. Nothing but row wise means it will fill it in the row wise like this. But no, I want to fill it in a column, correct? So that is the reason I'm selecting the columns. See, anything you're learning, you need to understand logically so that you will remember for a long time. आपको उतना याद नहीं रखने की जरूरत नहीं रहेगा, because you're not mugging up, you're understanding the concept. So we want to fit it in the column wise. So I selected the columns. And here is a very important one, step value. मुझे 10 के बाद क्या चाहिए? 11, 12, 13, nothing but 10, 11, 12, 13 and so on. Nothing but it should be incremental by 1. After 10 we require 11, right? 11 means how much we need to add? We want to add the 1 to it. If you want to add the 2, you
write the 2 here. Nothing but 10 plus 2 is a 12. 12 plus 2 is a 14, 16, 18. Like this will keep incremental. Is that clear? So, but in this case, I want to increase by 1, 1, 1 only. So I enter the 1 here. Then, yes, it is going to keep incremental, but what? Up to what? You need to mention the stop value. For everything, there is a stop value. For this class, there is a stop value. For everything is a stop, right? So here also there should be stop value. I enter the stop value as a 10,000. So once I click OK, you can see here, once I click OK, yes, it is filled 10 to 10,000 exactly. No more, no less. Is this clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you repeat? Can you repeat, sir? Yes, I do it. Once again, I'm doing. After I do this, you need to do this one. Understand this question. You need to do this. You need to do this. All of you need to do without asking me. You need to understand this question and then you need to do. So once again, I'm telling this. So we need to enter 10 to 10,000. So as it needs to be started from the 10, that is a 10 is a starting number. क्यों 10 से? आपकी मर्जी. 100 से भी start कर सकते हैं, 1 से भी start कर सकते हैं, -10 से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी. But in this case, it is a 10. Once you enter 10, go back to the previous cell. अगर previous cell को नहीं गए, यहाँ blank में रह के, सर मेरे इसमें नहीं आ रहा बोले तो नहीं आता है. क्यों बोलता blank cell में है? So be in this cell. ये cell में तो भी ऐसा edit में ऐसा blink नहीं होना है. Normally ऐसा रहना है. Nothing but it is not in edit mode. देखो यहाँ blink नहीं हो रहा है. Nothing but not in edit mode. In the home ribbon, click on this in the editing group. These all are groups: clipboard group, font group, alignment group, and so on. Go to editing group. In the editing group, there is a drop down. Fill series drop down यहाँ रहेगा. आप इसको click करो. उसमें से series को click करो. Once you click on the series, you will find the fill series dialog box. Correct. So in this one, like as we want to fill it in a column wise, let's select the columns. Step value default to 1 बोल के लिख के रखता है. If it is required, you need to change this accordingly. But in this case, let it be 1 because after 10, we want 11. That is incremental of 1. 12, 13, 14, 15, and so on. So stop value is a 10,000. आपको 10,000 होना है, 10 lakhs होना है, आप लिखो आपकी मर्जी. So once I click OK, it is filled all of them. Is this clear, everyone? Sir, I wanted to ask something. कि जो step value है, वो 1 से क्यों? मतलब 11 भी तो हो सकता है ना वहाँ हाँ, पे? हो सकता है. कौन ना को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है. Okay. Yeah, कुछ भी लिखो आप. You put it 1, no? That's why I asked कि No, we can enter anything. So understand here. For example, I enter the 1,000 here. Let's assume. मुझे क्या होना बोले तो 1,000 के बाद 1100 चाहिए यहाँ. हाँ. उसके बाद 1200 चाहिए. उसके बाद 1300 चाहिए. मैं कितना इंक्रीज कर रहा हूँ? कितना इंक्रीज कर रहा हूँ? 100. 100. Nothing but what is the step value? What is the step value? 100. Absolutely. Step value should not be 1 in this case. In this case, मुझे क्या चाहिए? 1,000, 1100, 1200 and so on. उसके लिए मैं 100 को इंक्रीज करना है. कहाँ तक होना है? मुझे stop value let's say 5,000 बोल के लिखा. Once I click OK. बट मेरे केस में एडिटिंग ओपन नहीं हो रहा है. आपका केस क्या है देखेंगे. इनका फिनिश करेंगे एक बार. So पूजा, is it clear? Yes, sir, clear. या जुबैर, या हाँ. आपके केस में लाइक आपको एडिटिंग ही ओपन नहीं हो रहा है ना? हाँ, ओपन नहीं हो रहा है. क्यों बोले तो मैं जो बोल रहा हूँ ना आप फोकसली नहीं सुन रहे हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से. 10 एंटर कर रहा हूँ. 10 एंटर करने के बाद आप यही रहते हैं, यही रह के होम रिबन में जाके सर मुझे ओपन ही नहीं हो रहा है बोलते हैं. मैं ये बात भी बोला था. आप ठीक से सुने तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा. आपको क्या करना है, 10 एंटर करने के बाद एंटर करो, नीचे आता है, जो भी एंटर करते हैं नीचे आता है, उसके बाद ऊपर जाओ. इज दैट क्लियर जुबैर? I did the same thing. Then you do the share screen. Share it. I stop my screen. Okay, 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 okay. I'll share you. What is the mistake you have done? No, no, no. I have not done any mistake. I'll show you the screen. Yeah. Okay. Is it visible? Not yet. Yeah, it is visible now. Yes, I entered 10 here, Hmm. as you can see. Yeah, yeah. Once again, I'll write down Do it, 10, yeah. then entered, then I'll go back. Hmm. Then I'm opening this one, but it's not showing. So okay. Is it series? Okay, okay. Hmm. Yes, sorry. Okay. So fine. So next, second and third, quickly do this, guys. Second and third. This one and this one. Understand that question? I don't explain anything. You understand and try it yourself. Hello, sir. Yes, Prashant. Can I share a screen, sir? Yeah, you can.
रवि ना हेलो सर Yeah, please बोलो. सर 10 सर टाइप किया देन नेक्स्ट सर गो टू सीरीज कॉलम 1 एंड देन राइट एट 1 ओके सर नो नथिंग Nothing, because आप सुन रहे नहीं ठीक से, इसीलिए. सर हो गया सर मैं सुन रहा हूँ प्रॉपर्ली मैं 2 बार बोला था. Like, guys, you guys tell me what is the mistake Prashant has done. stop value is 10,000 Stop value is 10,000. That is the one mistake. What is another mistake he was done? 10 to 1000 वो 10000 उन्होंने blank cell में था, वहां से ट्राई कर रहे थे, right? That is the second mistake he has done. Yeah, Yes, right, sir. प्रशांत. क्लिक करो उसको. नहीं, अगर फिर से एडिट में है, एस्केप क्लिक करो. या एस्केप क्लिक करो ना प्लीज. या कॉलम्स स्टेप वैल्यू, या वेट करो, स्टेप वैल्यू इज 1 बोले तो एक एक इंक्रीजमेंट होना है, वहां नहीं. स्टॉप Okay. वैल्यू 10,000. अब आपको नहीं बोले तो, आप स्टॉप वैल्यू नहीं बोले तो उसको कैसा पता चलेगा? सो पता नहीं चलता ना. Yes, sir. अपने तो अपना अपने अपन क्या करते हैं, like we asked our mom that mom, like, could you please feed me. So Yes. here also we need to tell clearly, otherwise it won't get to know, it cannot read your mind. So you need to tell that 10,000 or what is the number you required and click OK. Okay sir okay Right. thank you sir No problem. So go here, share screen. I'm sharing my screen. So guys, the next example, I hope you have done this. I required 10, 15, 20 and so on. What I did, guys, like people who did not done, like check out this. I required starting from 10 up to 15, incremental by 5. Multiple of 5, nothing but 10, 15, 20, 25 and so on. So fill series use karo. Column wise, step value. We want to increment by 5. So enter the 5 and stop value is a 50. That's it. Click OK and it is done. Next one is we required 100, 99, 98 and so on. So I want to fill it in the column wise. Tell me, what is the step value you write? 100 sir -1. -1 Minus 1. Why minus minus 1? Because from 100 we require the 99. Nothing but are we increasing by 1 or are we decreasing by 1? So that is the reason minus. Yes, minus sir. 1 sir And what is the stop value? 50 50 50. You write the 50. इसमें कुछ rocket science है, कुछ भी नहीं समझने का बात है क्या इसमें? no sir Easy है ना? So let me click OK and it is spelled all of them. Okay, 50 तक दे दिया. Not only increasing, you can do decrease also. So not only this, if you want to get the all the year dates, 2024 का dates चाहिए बोले तो, for example, January 1st से लेके 31st December पूरा date चाहिए बोले तो, first enter the January 1st. It can be any date. It need not be January 1st. It can be any year, any date enter करो. मैं तो खाली example के लिए January 1st 2024 का लिया हूँ. मुझे क्या चाहिए? January 2nd, January 3rd and so on. All the dates till 31st December तक चाहिए. Okay. So what I'm doing, you be in this cell. ये cell में रहो या ये cell में रह के मत करो. ये mistake कर रहे थे. प्रशांत, you should not be in this blank cell and be in this cell. And यहाँ भी ऐसा कर्सर blink नहीं होना है. या दिख रहा है क्या आपको? लाइक ये कर्सर ऐसा ब्लिंक हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला एडिट मोड में है. ऐसा है तो जब क्या करो, इसको एस्केप क्लिक करे तो वो ब्लिंक नहीं होता है. एस्केप. सो उसके बाद होम रिबन में जाइए, एडिटिंग ग्रुप में ड्रॉप डाउन एंड सीरीज, click on the column wise. We want to fill it in the column wise. Now you see the beauty of Excel. Excel understood that the type is a date. Earlier cases this type, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा था मैं. I did not say anything about it because earlier the numbers series, so it is automatically taken as linear. But this time, as the selected cell is a date, it is already taken as a date. So once it is a date, this date related 4 options will be enabled. Whether you want to increase by day wise or weekdays or month or year, you can select. I'll select the day only. Nothing but day wise, January 1st, January 2nd, January 3rd, January 4th. Like this, one day needs to be increased, correct? Day you select and step value is 1. 1 means 1 day. Okay, stop value. Stop value here, you write the 31st. 31st, correctly go. 31st, 12, 2024. और एक बात ये है कि like you need to enter as per your system format. My system format is DDMMYY. How do you know what is your system format? My system format देखो यहाँ DDMMYY है. DD 22nd date, 9th month, year. उसको DDMMYY बोलते हैं ना. D means date, M means month, Y means year. So as per that format only you enter. In some of your laptops, it might be MMDDYY. In that case, you need to enter in the MMDDYY only. Got it? But most of our Indian laptops will be in the DDMMYY. So once I click OK, you can see that magic happened and it is giving from January 1st to 31st December 2024. समझ में आए? yes sir Cool. Let's see another example. अगर आपका EMI है, सोचो, of course you are freshers, like once you get a job, first thing you do is you take some loans, many times, or middle class people. So let's say that EMI starts on the February, 10th February 2024 में start हुआ है. Assume every month 10th को आता है. February 10th, March 10th, April 10th, वो EMI dates है every month, right?
So it should be incremental by month wise. Correct? So fill series, column wise, date already it is got selected because that Excel understood that it is a date. So instead of date, you select the month. आपका EMI लास्ट EMI कब तक है? Let's say next year December तक है. सोचो आप like 25th December 2024 2025 बोल के लिखो next year तक. आप December 25 बोल के लिखे, Christmas days लिखे हैं. Once I click OK, it is filling up to December 10 only because we said I mean incremental by 1 month, right? One month it is increased and it is stopped at the December 10th. Is that clear? Yes, sir. सर अगर EMI का नंबर पता हो लाइक 25 EMI है तो अगर अपने को कैलकुलेट ना करना हो तो डायरेक्ट कैसे आएगा? थोड़ा समझाना चाहिए. I did not get it. सर अगर EMI जो है वो 25 टेन्योर जो है उसका 25 मंथ है, तो 25 मंथ है और 25 मंथ में रहेगा ना. ओ 25 मंथ्स है क्या? ओके ओके. सो 25 तो मंथ्स 25 मंथ हमको ये नहीं पता है कि जो एंड डेट है, जो एंड वैल्यू है वो हमको नहीं पता है. जैसे यहाँ पे पता था कि अंडरस्टूड. लेट मी कम टू दैट. फिल सीरीज में नहीं होगा वो, मगर आप बोल रहे हैं ना लाइक ये मंथ में स्टार्ट हुआ है, 25 मंथ्स EMI है, वो बोल रहे हैं. करेक्ट? सो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ EMI यू वांट टू नो? करेक्ट? यस सो सर. फॉर दैट देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड ई डेट. ई डेट में स्टार्ट डेट दे दो, कामा मंथ्स में 25 मंथ्स बोल रहे हैं ना, वो मंथ्स दे दो, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर बोलो, उसका डेट दे रहा है. ये डेट फॉर्मेटिंग नंबर जैसा है, इसको खाली ऐसे डेट कर लो. देखो वो March 10 2026 को होता है. नहीं 25 मंथ्स नहीं 12 मंथ्स बोलो, 12 मंथ्स का आ गया. 50 मंथ्स 60 मंथ्स 5 साल का दो, आ गया. इज दैट क्लियर? सर ये दोबारा एक बार प्लीज. नहीं ये उनका डाउट है, लाइक खाली फॉर्मूला के रिलेटेड, आई मीन इसको कर सकते हैं बोल के मैं बताया. सो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मूला. वंस वी गेट इनटू फॉर्मूला आई विल टीच यू द फॉर्मूलास. फॉर नाउ यू कैन लीव इट. ओके Okay, बट इट कैन बी डन. So this is about the fill series, guys. Yeah, so you can also try time with interval of 30 minutes. For example, morning 9 o'clock आपका स्कूल आई मीन कॉलेज स्टार्ट हो गया. सोचो एवरी 30 मिनट्स को एक ब्रेक आता है, नहीं तो पीरियड चेंज होता है, व्हाटएवर इट इज. मुझे क्या होना बोले तो 9 9:30 10 10:30 11 11:30 एंड सो ऑन टिल इवनिंग 3 o'clock, आफ्टरनून 3 o'clock तक. सो इफ दिस इज द केस, हाउ टू एंटर दैट मैनुअली? आई मीन मैनुअली अगर करना है तो बहुत टाइम लगेगा. First of all, remember that whenever you are going to enter the time, you need to enter hours, minutes, seconds. So how do you enter the time? Let me show you. मैं simple requirement बोल रहा हूँ, उतना complicated नहीं है. क्या बोल रहा हूँ? मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक कंटिन्यूस हाफ एन आवर टाइम आना चाहिए. मॉर्निंग 9 से लेके 9 9:30 10 10:30 11 11:30 लाइक दिस. सो पहले तो 9 o'clock एंटर करो. टाइम कैसे एंटर करते हैं? 09:00:00:00. इसका मतलब क्या है? 9 hours 0 minutes 0 seconds. Hours minutes seconds, इनके बीच में कोलन है. That is separate the hours minutes seconds. Is that clear? Then followed by AM or PM. In this case I'm typing the AM. Morning है ना AM, night है तो PM बोल के लिखो. Enter. So once you enter, as the time is also number, it is right aligned. That's okay. Now use the same fill series. Go here, fill series. So fill the series in the column wise. And मुझे step value क्या चाहिए? 30. या 30 minutes ना. Yes, sir. 30 मत लिखो, 30 minutes है. minutes बोल तो hours minutes seconds ना. hours को कैसे? Zero. hours में तो 0 And colon 30 minutes and 0. colon 0 seconds. Agree? So Okay. hours minutes seconds बोल के लिखा हूँ. टैब कब एंड होना है? 3 बजे 3 o'clock 3:30 आपका जो भी स्कूल टाइम है, ऑफिस टाइम है, वो लिख लो. सो 3 PM 3:03 लिखो, नहीं तो 3 एनीथिंग इज ओके. 00 minutes and 00 seconds and followed by PM. Agree? You need to enter this PM. Once I click OK, so you can see this 9 9:30 10 10:30 and so on. It is done. Got it? Yeah. Got it, sir. So cool. So okay, अब अपन ब्रेक के बारे में, इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं ना. So let's take a 5 minutes break. After that we'll continue. So Hello, break sir. for 5 minutes. Okay, sir. Okay. Yeah. Sheetal, I'll take your query after the break. Is that works? Okay. Yeah, Fine. sure.
करके हेलो गाइस। गाइस वो इन्वेस्टेड अमाउंट का किसी ने ट्राई किया? Yes, guys, we are back. Yes. Yeah, great. So, सर yes, आई एम please. ट्राइंग टू मतलब मैंने एडिट का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, आई एम ट्राइंग टू फिल दैट आल्सो बट इट्स नॉट फिलिंग, मतलब हो नहीं रहा। Share your screen quickly. हेलो सर। Yes, please. आप सर वो सीरीज वाला थोड़ा रिपीट करेंगे क्या सर? ओके, एक बार पूजा का रिक्वायरमेंट सुन रहा हूँ, लाइक उसके बाद सीरीज का बहुत एग्जांपल बोला, उसमें कौन सा एग्जांपल समझ में नहीं आया आपको? पूजा, आर यू शेयरिंग योर स्क्रीन? यस सर, आई एम ट्राइंग। हेलो सर। या सर कोई व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है क्या? अगर कोई क्वेरी आता है तो ग्रुप वगैरह क्रिएट किया है क्या? तो क्या कर सकते हैं क्या कुछ ग्रुप वगैरह क्रिएट, जो इस बैच के बंदे हैं वो? actually, as per the company policy, I guess, like we should not create. So, हम्म। but you people, if you have like together, you people can discuss and help yourself. हाँ, But हाँ, मेरे हम लोग side से कुछ help चाहिए बोले तो I think you need to send a info support team so that they will reply back. नहीं तो next week में like मैं weekend में class बोलता हूँ ना, weekend में like first few minutes we'll take the your queries. हेलो सर। Yes. तो यहाँ पे नंबर शेयर करके कर सकते हैं क्या? अगर Uh, ग्रुप क्रिएट करना है तो यहाँ पे नंबर दे देता हूँ मेरा। yeah. चलेगा? Yeah, Pooja, I'm able to see your screen. Minimize that. Zoom का दिख रहा है, उसको minimize करो. Show your Excel. Yeah. Yeah. ऊपर जाइए. नहीं, wait. Go to the 9 AM, right? Be in the 9 AM. You need to be in that cell. Otherwise, it won't work. 9:30 को delete कर दीजिए, जरूरत नहीं है. Delete. Click on delete button.
Yeah. So step value. First of all, you select as a columns. You want to fill it in a column wise or row wise? There's a columns, right? You're on mute, Pooja. So step value. कितना चाहिए आपको? 30 minutes का break है, नहीं तो interval like 45 minutes. You take a call. So you need to enter the time. So nothing but 00 colon 45 colon 00. उसके बाद stop value में आ जाओ. उधर let's say 5 PM 00 sorry yeah correct 5 colon 00 colon 00 PM भी लिखना है यहाँ space PM space देने के बाद PM बोल के लिखो. Click OK. Can you see that 9:45 10:30 11:15 45 minutes का incremental हो गया. समझ में आया पूजा? Pooja, you're on mute. Yeah, next one. Anyone having any query? Got it. Yeah, Pooja, done. Obviously. Sir, till what time this session will end? Like every 9:30. day? 9:30. 9:30. Yeah. क्यों weekend हो जा रहा है और क्या ये हो रहा है क्या? सर No, no, हेलो actually, Just kidding. Yeah. हेलो Yes. सर ये सारी फाइल मुझे मेल पे मिल सकती है क्या? एक्चुअली मेरे लैपटॉप में अभी या मेल में एक्सेल मिल नहीं जाएंगे आपको मिल कल जाएगी ना? या कल मिल जाएंगे. हाँ क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए ना. या sure. ठीक है सर, थैंक यू. सर ये क्लास Yes प्रशांत बोलो. सर ये क्लास रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी ना? एलएमएस में मिल जाएगी? मिल जाएगा और उसका पक्का सुनना भी. एक फीडबैक बोलूं मैं आप लोगों को इफ यू डोंट माइंड. तो मेरा फीडबैक ये है कि आप लोग बहुत प्रैक्टिस करना है. बहुत प्रैक्टिस करना है आपको. आई मीन स्मॉल थिंग्स यू नीड टू प्रैक्टिस मोर लाइक और थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था मैं लोगों आपसे. आप जैसा ट्रेनर बहुत अच्छा ट्रेनर चाहिए, अच्छा समझाना, नॉलेजेबल रहना बोलते आप कैसे सोचते हैं वैसा ही हम भी स्टूडेंट भी बहुत हार्ड वर्किंग रहना है, अच्छा फोकस नहीं सुनना सोचते हैं. अभी देखो मैं बात कर रहा हूँ पीछे से बात होते रह रही लाइक पीपल आर नॉट ऑन म्यूट. सो स्मॉल थिंग्स वी एक्सपेक्ट गाइस. सो when we are in the training like while you're not talking be on mute like if you have a query like then like you ask question. मगर लाइक ट्रेनर बीच में बोल रहा है जब आप सर बोल रहे तो जब भी डिस्टर्ब हो जाता है. मुझे बोलने का मुझे बहुत पेशेंस है, प्रॉब्लम ही नहीं है, एक का 4 बार भी बोल सकता हूँ. मगर आप सोचो लाइक मैं एक ही टॉपिक 2 घंटा बोल रहा था, आप लॉस होते हैं मैं लॉस होता हूँ. like instead of teaching the 10 topics I'll end up by teaching only 2 topics 3 topics. that's it. हो गया मेरा इतना. मुझे आवरली तो पेमेंट आता है, कितना आवर्स बोले तो मुझे उतना आवर्स आता है. so क्या टॉपिक बोल रहा हूँ वो नहीं देखते हैं. so how many hours I take in the class, that's what company will see. so if I increase I mean of course number of hours will be the same. 10 hours दिए तो 10 hours में मुझे खत्म करना है, मगर 10 hours से ज्यादा वो देते नहीं. एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं. so वो 10 hours में आप कितना सुन सकते हैं, कितना इनपुट मेरे से ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में आप ज्वाइन होके सर व्हाट इज द फ्लैश बिल बोले तो मैं फिर से वही एग्जांपल बोलते जा रहा हूँ. सोचो people who listen properly for them it is a loss, right? so people who join late and they are asking that hey can you please repeat, I can do it, but the problem is but the problem is like same thing again repeat हो रहा है तो time waste होता है. उतनी सी बात है. so if I hurt you people don't take it don't mind. so my intention is like to teach you more and more. so अगर वो उसके लिए आप रेडी है तो हार्ड वर्क करो ये वीकेंड में. आई मीन नेक्स्ट वीक पूरा टाइम है आपके पास, रिकॉर्डिंग भी है, अपन तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करे हैं. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द कमिंग वीकेंड. सो ओके सर. या ओके सर. आपकी साइड से कुछ कमेंट है तो बोल देना. मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो बोल रहा हूँ, जो भी है तो No, sir, no, sir. लाइक I'll try to fix it. या हेलो व्हाट इज योर फीडबैक? या राहुल बोलो. सर अगर ये प्रैक्टिस करते टाइम पे कोई डाउट आया और कुछ प्रॉब्लम आई तो किसको कनेक्ट करना है वीकडे में, मतलब नॉर्मल डेज में? that okay I'm not really sure. you should have aware. I mean starting में आप ज्वाइन करने के टाइम में आपको बोले होंगे. so सपोर्ट टीम के को कनेक्ट करना पड़ेगा. एक बार कॉल कर लो, सेल्स टीम वाले रहते हैं उनको कॉल करके पूछो. इवन आई एम नॉट अवेयर बट देयर विल बी समवन विल बी असिस्ट यू. so उनको पूछना लाइक जरूर हेल्प करेंगे. सर मतलब एक्चुअली जो कुछ भी आप अभी जो सीखा है फॉर एग्जांपल वो प्रैक्टिस करते टाइम पे कोई चीज समझ में, मतलब हम जो इंटर कर रहे हैं मैं वो आपकी बात एक्चुअली समझ रहा हूँ. हाँ हाँ Yeah, I understood your Guys. query, but the thing is like who is going to solve and how it is going to resolve, I'm not aware. But एक बार कल कॉल कर लीजिए सेल्स टीम वालों को, आपके पास जो भी नंबर है ना कंपनी का, उनको Yes, कॉल करो, definitely help you out. Okay? As sir. of not aware, I'll try Sir. to figure it out. क्या है प्रोसीजर मैं एक बार पता करने के लिए देखूंगा. अगर मैं मुझे पता है तो like I'll inform you in the next weekend. But next week तक अपन कनेक्ट नहीं होते ना, so that's the reason you connect them and you check with them. Okay? सर एक सजेशन ऐसा था कि हम लोग जो ये बैच के हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं. अगर उनमें से किसी को कुछ क्वेरी वगैरह होगा तो उस ग्रुप पे शेयर होती जाएगी. तो मैं मेरा नंबर यहाँ पे चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ. तो वहाँ पे मुझे सब लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो. वहाँ पे चलेगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं. आपने रहोगे तो भी चलेगा? या मैं नहीं रहूंगा. आप हाँ. लोगों को क्रिएट करे तो आई डोंट नो, बट ये प्रॉब्लम होगा कि व्हाट्सएप हम एंकरेज करें तो अगर उसमें कुछ लड़कियां भी रहते हैं, कुछ लोग अननेसेसरी सिक्योरिटी रीजंस, आई मीन ये सब इश्यूज होता है ना, उसीलिए लाइक कंपनी इज नॉट अलाउइंग स्टूडेंट्स आल्सो टू क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप. बट आई डोंट नो हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड. जिसको इशू है वो ज्वाइन ना करे. हाँ, और जिसको इश्यू आएगा वो ज्वाइन नहीं करे, कोई इश्यू नहीं. ये नंबर शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ.
Okay, I'm taking that risk, keeping in mind that like you people are really interested in learning the subject. So with that reason, I sharing that Kamlesh का number दिया है, वही copy paste कर रहा हूँ मैं. So like you can create a WhatsApp group, but make sure that you post only related to Excel queries, Excel knowledge related वही करो. कुछ भी नहीं करना है, like good morning messages, good afternoon. I mean वो person वो number देख के लड़की का number है, चलो मैसेज करता हूँ, personal message वो सब नहीं करना है. I mean नहीं straightforward बोल रहा हूँ मैं. नहीं, ये कोई Sorry नहीं guys. करेगा, ये कोई Yeah, नहीं करेगा. yeah. So गाइस रिक्वेस्ट है आपको सबको कि जो क्वेरी होगा असाइनमेंट रिलेटेड होगा, कुछ लेक्चर्स रिलेटेड होगा तो शेयर करो ग्रुप पे. yeah, मैं कमलेश का number share करा. So Kamlesh, you can I mean you would have shared that link actually, WhatsApp group link, so that I can share it here. हेलो WhatsApp group create कर दो आप. यहाँ पे सिस्टम पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मोबाइल पे है, तो लिंक मुझे. फाइन. सर आप इस ग्रुप में रहेंगे क्या? नहीं मैं नहीं रहूंगा, मैं रहे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा. मैं नहीं रहूंगा. सर हेलो. या हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेरी डालना पड़ता है सर, मैंने पूछा था कि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वीकेंड के बाद मतलब जब हम क्लास फिर से देखेंगे रिकॉर्डिंग तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैंने पूछा था कि उन्होंने बोला था कि आपको जो डैशबोर्ड है वहाँ पे क्वेरी डालना पड़ेगा, तो वो लोग आपको फोन कर देंगे, फिर आपको बता देंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है और इशू रिजॉल्व कर देंगे. ओके वैसा है क्या? ओके हाँ, LMS में डैशबोर्ड में क्वेरी डालना पड़ेगा, राइट? हेलो सर ऐसा ही बोला गया था सर. या सबको हेलो यस राहुल. सर आप लिंक्डइन पे हो क्या? या आई एम. यस सर, आप लिंक्डइन का आईडी शेयर कर दो ना सर प्लीज. वो भी मैं आई थिंक आई शुड नॉट शेयर इट, बट यू सर्च माय नेम यू शुड फाइंड इट. सर मैं सर्च किया बट आपका नाम से दिख नहीं रहा है, इसके लिए आप एक बार शेयर कर दोगे तो कोई इशू रहेगा तो आई कनेक्ट भी कर सकते हैं हम आपको उधर. मगर मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि लाइक मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ नहीं कि नहीं मालूम, फिर भी लाइक आई एम शेयरिंग लाइक सी एक्सपेक्टेड डिले रिस्पांस फ्रॉम माय साइड. चलेगा सर. ये दो भी नहीं करना था, मैं कर दिया मैं इस बार तो. मगर लाइक डू प्रैक्टिस गाइस, लाइक यू पीपल रियली रिक्वायर्ड टू मच प्रैक्टिस. लिसन द रिकॉर्डिंग एंड डू प्रैक्टिस. लाइक नेक्स्ट वीक तो बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ वो भी मैं दे रहा हूँ यहाँ. सो यू डू लाइक रिसर्च. गूगल करना छोड़ दो, चैट जीपीटी को स्टार्ट करो. आई गेस ऑल ऑफ यू माइट बी यूजिंग द चैट जीपीटी ऑलरेडी, बट इफ एनीवन ऑफ यू आर नॉट हैविंग द चैट जीपीटी अकाउंट, create the chat gpt account. It is a free, and start using the chat gpt. So as I'm talking about the chat gpt, let me quickly show you. So here in the chat gpt, like you can chatgpt.com, that's the site, right? Like you can ask anything. So you're saying that, hey, what if I have a doubt how to connect with you and all. So instead of connect with me, you can ask ChatGPT. One prompt you write it, right? That act as my Excel trainer. Excel trainer. I have questions related to Excel. Please do answer one by one. Like this, you write in your own English. It need not be the same words, guys. However, I'm giving this prompt here. I paste it to you in the chat box. Enter. It's saying, I would be happy to help you with the Excel questions. Feel free to ask your first question and I'll provide a clear answer. So you ask, what is Flashfill? What is the shortcut? What is the shortcut key for Flashfill? Control E. Flashfill automatically fills in values based on the patterns detected from your data and so on. वो सब बोल रहा है. और control E is the important one, right? That it make it as a bold also. So your focus will be on it. So you ask any questions related to it and it will give you. Otherwise you ask like this. I have interview tomorrow. It's purely on Excel. Could you tell me common interview questions in Excel? Enter. What's the different types of data formats in Excel? What is how do you use a VLOOKUP and HLOOKUP? Relative reference, absolute reference, ये reference क्या है? Question भी दे रहा है, answer भी दे रहा है. So ये 8 questions ही दे रहा है. Like what you can ask, hey, give me thanks. Thanks भी बोल दो उसको, आपका friend जैसा सोचो. So thanks, like could you give me 10 more questions with answers? Certainly, here are the 10 more questions. So इससे पहले like वो ऐसा दे रहा है ना, like इससे पहले कोई की पूछ रहे थे like ये तो EMI डेट है 10th 3rd month 2024 में मेरा EMI स्टार्ट है और let's say it is a 36 months का है. So कब एंड हो रहा है बोले तो मैं ई डेट बोल के पूछ रहा था, यूज कर रहा था, डेट बोल के, ये बोल के, एंटर बोल के, राइट? लाइक इट इज गिविंग दिस आउटपुट. So what is this formula is all about? I don't know. So I want to understand this formula. You need to tell that okay, ये यहाँ नहीं, ऐसा करेंगे.
In A1 cell, you tell Excel that in A1 cell I have the date, in B1 cell I have the months, and in the C1 cell I have this formula. I don't know what is this formula is all about. So could you please explain? I'll take a copy of it. Go here. From A1 to C1, I do have below values. Below values. ये पिक्चर भी आ रहा है, पिक्चर भी रहने दो. So no. So picture close करेंगे. Yeah. Shift and enter it goes to the next line. Below values. In C1, it has formula. What is that formula? You can go here. Formula bar से ऐसा copy कर लो. Copy करके. It has the formula this one. Copy नहीं हो रहा था. ऐसा कुछ formula है ना? यही है ना formula. Equal to E rate A1 comma B1 ऐसा है ना? So I written the same thing here. Could you explain this formula step by step? Enter. Let's break down the formula E date A1 comma B1 step by step. A1 इसमें date है, B1 में a number of representing months, C1 is this. Explanation पूरा डिटेल से देता है. आपको पढ़े तो आपको अच्छा समझ में आ जाता how this formula works and all. So any formula, anything in Excel, you can get the output from the ChatGPT. Very powerful. ये आने के बाद हमको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो आते थे ना, सर हमने डायरेक्शन ही गलत दी थी चैट जीपीटी को, तो वो बताता है क्या? नहीं था ना, लाइक अच्छा क्लियरली बोलना है ना. नहीं तो सी आप डायरेक्शन मुझे रॉन्ग बोले तो मुझे भी समझ में नहीं आता, चैट जीपीटी को नहीं आता. जैसा आप एक्सपर्ट को बोलते हैं ना, वैसे ही इसको भी बोलना है. हाँ सर, बट चैट जीपीटी भी मतलब उसको भी कम्युनिकेट करने के लिए मतलब कुछ ना कुछ बेसिक्स आना पड़ेगा ना हमको. हाँ उसी लिए था ना. चैट So जीपीटी का. simple basic what I'm telling you is, so you need to understand other person like this ChatGPT as an expert of whatever your query. For example आपको टैक्स के लिए रिलेटेड क्वेरी है तो you tell that like here देखो act as a एक्सेल ट्रेनर बोला, नहीं तो एक्सेल डेवलपर बोलो. एक्ट बोले तो उन्होंने एक्टिंग करता है, वैसा थिंक करता है, एक्सेल ट्रेनर जैसा, एक्सेल डेवलपर जैसा. ये एक प्रॉम्प्ट ठीक से दे देना. उसके बाद आपको जो भी उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वॉट एवर यूर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दी ChatGPT, यू टेल दैट आई हैव क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्सेल, प्लीज डू आंसर वन बाय वन बोला. बोले तो एक क्वेश्चन देने के बाद और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बस आंसर दो बोल के. प्रॉम्प्ट देना है, ठीक से बोलना आना है. जैसे अपन बात करने में अपन को ठीक से बात करना आता है, सो सेम थिंग यू पुट इट इन द ChatGPT, so definitely will give the answers. Of course not 100% correct answers, but technical answers like this definitely will give the correct answers guys. आप करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा. ओके 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 या नहीं तो वही बात पूछो लाइक ये ऐसा करेंगे. आई एम न्यू टू ChatGPT, हाउ टू communicate better with ChatGPT so that I will get best results from it. Be specific and clear. Break down complex results. Context helps. Ask for clarification. ये सब एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आता है इससे कैसे बात करना है बोल के. So ये है प्रॉम्प्ट लिखा मैं. ओके 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 इसको ये पूरा बोल रहा है ना, और इसको मैं क्या बोलता हूँ. ओके ग्रेट. could you give few example prompts which follows the above mentioned instructions. Give me क्यों बोलने के सिवा प्लीज गिव 10 एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट्स बोल रहा हूँ. एंटर. ये पूरा बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन अच्छा है, मगर लाइक मुझे 10 एग्जाम्पल दो बोल के पूछ रहा हूँ. Here are the 10 example prompts that follow the tips for communicating effectively with the ChatGPT. Be specific and clear. उसके what are the best ways to use a VLOOKUP function for matching data between two spreadsheets. ऐसा बोल के I mean be specific बोलते क्या है, break down complex requirements first second ऐसा बोल के लिख रहे हैं. So ऐसा दे रहा है, 10 डिटेल दिया है ये. I want to improve my morning routine for better productivity. I currently wake up at 6 a.m. and do 20 minutes exercise. Can you suggest small changes that can help me focus more throughout the day? ये देखो कितना अच्छा डे देता है. ये प्रॉम्प्ट दिया सकते हो. रिजल्ट्स हाइड्रेट इमीडिएटली. सुबह सुबह उठते कि पानी पी लो. मॉर्निंग स्ट्रेच और योगा एंड सो ऑन. इट्स टेलिंग यू. सो दैट इज ऑल गाइस. सो होप यू लाइक द सेशन. मगर मैं बहुत कम पढ़ाया हूँ आज तो. नेक्स्ट वीक विल जॉइन लाइक 5 minutes बिफोर इटसेल्फ. 7:30 को रहता है ना, 7:20 7:25 तक ज्वाइन हो जाओ. डोंट ज्वाइन लेट एंड डोंट टेल दैट आई जॉइन जस्ट नाउ एंड कुड यू प्लीज रिपीट. ऐसा बोल के बच्चों की जैसा नहीं करना अपन. सो वी आर प्रोफेशनल, सो लेट्स डू दैट वे. मैं थोड़ा वर्ड्स थोड़ा हार्ड दिख रहा होगा, थोड़ा वर्ड्स डोंट टेक इट अदर वे. मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ.
That's it from my end. Anything else, guys? Any questions? ये सर आप नंबर शेयर करने वाले थे सर, जो वर्जन अपडेटेड नहीं है। Yeah, कमलेश का नंबर शेयर कर रहा था ना मैं फिर से। हाँ Yeah, कमलेश like नहीं, जो वर्ड एंड एक्सेल के जो वर्जन है वो अपडेटेड नहीं है हाँ वो उसके। नंबर ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट, दैट्स अ गुड वन, या यू रिमाइंड मी। 1 मिनट, मेरे फोन में है वो। 1 मिनट, लेट मी ब्रिंग इट। या हेलो सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करना था, वो उसका क्या? वो मुझे नहीं मालूम, लाइक उन्होंने कमलेश का नंबर दिया था, वो नंबर में ग्रुप चैट बॉक्स में शेयर करा था। कमलेश अगर उन्होंने लिंक दिया तो मैं शेयर करता था। हाँ, लिंक दिया तो अच्छा होगा। या आप लोग अभी कोई भी लिंक क्रिएट कर सकते थे ना, अभी अभी का अभी। आई वेट सो दैट लाइक आई कैन शेयर इट, वो कर सकता हूँ। कोई कर रहा है क्या? आई शेयर द वन नंबर MS ऑफिस इंस्टॉलेशन बोल के, वो नंबर को आप कल कॉल कर लो, लाइक अभी 10 हो रहा है ना, 10:30। सो दे विल असिस्ट यू, दे विल चार्ज यू अराउंड 1800। यू विल गेट द Microsoft 365। सर यस प्लीज। वो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट का है ना, कोई हिंट दीजिए ना, ट्राई करूंगा खुद से। ओके, वो आप लोगों को मैं नहीं बोला था। हाँ, यू सी हियर डे 1 से लेके 30 डेज है सोचो। डे 1 से लेके डे 30, ये कुछ भी सम डेज है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 रुपी ऑन द डे 1, सितंबर में 30 डेज है ना, उसका एक बात कर रहा हूँ मैं। ऑन डे 1 यू इन्वेस्टेड द 1 रुपी, ऑन द नेक्स्ट डे सेकंड डे यू आर इन्वेस्टिंग डबल ऑफ द प्रीवियस। डबल बोलते 1 का डबल कितना है 2, और 2 का डबल कितना है 4, 4 का डबल कितना है नेक्स्ट डे 4 का डबल 8, नेक्स्ट 16 16, right? Then after that 13, 32, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 and उतना ही, उससे ज्यादा मुझे नहीं होता है, right? So I cannot do like this manually. Instead you delete all of them. मेरा रिक्वायरमेंट क्या है बोले तो, ऐसा डबल करते गए तो अब 30 डेज के बाद आपके पास कितना रहता, हाउ मच ऑन 30th डे, हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट। अदरवाइज इन दिस 30 डेज में पूरा मिला के कितना इन्वेस्ट करें। सो कितना हो सकता है 30th डे में, कितना इन्वेस्टमेंट होगा? कैन यू गेस? रफ नंबर, नॉट एग्जैक्ट नंबर, रफ नंबर बोल दे। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितना होगा? गेस करो। मिलियंस के आगे। Okay. Anyone else? Did you get it, guys? Like I'm saying that one, here is a in 30 days ना? instead of doing like this, what you do is you select the first cell, first one, remaining all are blank, correct? You scroll down, hold the shift button and click on the last one so that all these blank cells also got selected. ऊपर तो 1 है, वो रहना है। उसके बाद editing में click on the drop down and click on the series. Here you see this, fill the series of numbers column wise, and here you select the growth of 2, nothing but double. And the stop value, don't enter anything because we don't know that what is the stop value. 30th day में क्या stop value नहीं मालूम है अपन को. Leave it. Simply click OK. Once I click OK, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ये यहाँ तक तो करें। देखो 18 फिर 17 डेज तक 6000 में ही है। 18th डे में क्या हुआ? 1,31,000, 2,62,000, 5 lakhs, 10 lakhs, 20 lakhs एंड सो ऑन। 30th डे को देखो 5 crores, 53 crores है वो, 53 crores 68 lakhs 70,912। और पूरा ये 30 दिन में कितना इन्वेस्ट करे आप बोले तो, इन्वेस्टेड अमाउंट इज दिस मच। अगर ऐसा करना करे तो अब 107 crores इन्वेस्ट करना है 30 डेज में। सो ये था। ओके निरंजन, ओके फाइन गाइस। So happy weekend. Oh, weekend हो गया ना? So happy next week. Like spend your time productively, learn new things, and we'll catch up in the next Saturday, coming Saturday. Okay. I'm closing the meeting now. Thank you, sir. Thank you all. Thank you so much, sir. Thank you everyone. Bye. Thank you, sir. Good night.